Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हम हाजिर हैं और इन खबरों पर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद निखिल जी। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन। Domestic benchmark indices end flat after hitting new highs. Sensex surges to an all-time peak of 85,163. Nifty crosses the 26,000 mark for the first time. S&P Global Ratings retain India's growth forecast at 6.8% for the current fiscal year, and the labour force participation rate increases to 60.1% during July 2023 to June 2024. घरेलू शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सपाट स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स दिन के कारोबार में 85,163 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और निफ्टी पहली बार 26,000 के पार गया। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की विकास दर को 6.8% पर बरकरार रखा और श्रमिक बल भागीदारी दर जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच 60.1%। Market Mantra. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज उतार चढ़ाव से भरे कारोबारी सत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद करीब सपाट बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 85,163 के सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अंतर्दिवसीय कारोबार में पहली बार 26,000 अंक के स्तर को पार कर गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 14 अंक यानी 0.02% नीचे आकर 84,914 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 25,940 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 166 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 40 कंपनियां 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गईं। सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 15 कंपनियों ने बढ़त दर्ज की। वहीं विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.2% से अधिक की तेजी आई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.04% की गिरावट देखी गई। Domestic benchmark indices ended flat after hitting new highs in today's volatile trading session. BSE Sensex surged to an all-time peak of 85,163, while the NSE Nifty crossed the 26,000 mark for the first time in intraday trade. At close, Sensex was marginally down by 14 points of 0.02% to close at 84,914, while Nifty ended nearly flat and was marginally up at 25,940. In the National Stock Exchange, 166 companies hit their 52-week high, 40 hit their 52-week low. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index inched up by 0.2%, while the small-cap index ended marginally down by 0.04%. In the Sensex pack, 15 out of 30 companies ended in positive territory. The top gainers were Tata Steel, which surged by more than 4%, Power Grid gained more than 2.5%, and Tech Mahindra increased nearly 2%. Conversely, the top laggards were Hindustan Unilever, which shed more than 2.5%, Ultratech Cement lost more than 1.5%, and Kotak Mahindra Bank declined more than 1%. In sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 12 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were metal, which increased by more than 2.5%, power as well as utilities added more than 1%, and commodities advanced by nearly 1%. Meanwhile, the top laggards were FMCG, which shed 0.7%, telecommunications lost more than 0.5%, and services fell by nearly 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,076 companies, the shares of 1,932 companies advanced, 2,045 companies declined, and 99 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज 11 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपए और 67 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 100.75 पर था। उद्यम जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय शेयर बाजार में हर रोज रिकॉर्ड बनने का सिलसिला हमें नजर आ रहा है। बीते 2 दिन की तूफानी तेजी हमने देखी, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी की रफ्तार हालांकि थोड़ी सी धीमी नजर आई, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी ने एक नया इतिहास रच दिया। जी, आप सही कह रहे हैं। और आज एक्चुअली कई दिन ऐसे जाते हैं स्टॉक मार्केट्स में, काफी कुछ एक्शन रहता है। तो आपने देखा होगा दिन भर उतार चढ़ाव रहा और एक वक्त तो मार्केट बाजार नीचे की तरफ जा रहा था, पर चीन से जो खबर आई वहां पे ब्याज दरों में कटौती हुई, उसका एक बहुत जबरदस्त एशियाई बाजारों में इम्पैक्ट रहा। और आप देखेंगे मेटल स्टॉक्स के ऊपर मुझे लगता है उस खबर का असर पड़ा है। पर ओवरऑल जो आप देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में जहां पे हैं, वो उससे ऐसा नहीं लगता कि ये दिन भर इतना एक्शन रहा था। वो कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और क्योंकि चीन से वो खबर आई है जिसको सकारात्मक, कुछ हद तक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, तो दूसरे अन्य जो एशियाई बाजार हैं तो वहां पे भी उसका पॉजिटिव सकारात्मक असर रहा है। तो हो सकता है ये जो प्रॉफिट बुकिंग और इंस्टीट्यूशंस ने की है तो वो एक रीएलोकेशन की तरफ जरूर देख रहा हूँ। इसमें एक चीज अगर देखें, जो बार बार हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पर जाने का सिलसिला सच चल पड़ा है, कई बार ये सुनने में आता है, तो ये वास्तव में दर्शाता क्या है? एक आम निवेशक के नजरिए से देखें तो क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? उम्मीदें तो काफी रखी जा सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताने लायक है वो ये है कि जो बाजार से जुड़े हुए निवेशक हैं, मैं डीमैट अकाउंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, जो डायरेक्ट निवेश होता है वहां से शायद पैच करना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप जब आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड निवेश करते हैं तो पैन नंबर से आप यूनिक जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उसके बारे में नंबर आंकड़ा निकाल सकते हैं। और हम 5 करोड़ की संख्या तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो डबल हुआ है, ये पीछे डबल हुआ है, ये पिछले 4 साल में शायद डबल हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको आंकड़ा नहीं, तो ये दिखा रहा है जब मार्केट कामयाब होता है तो मार्केट की तरफ लोग खींचे चले आते हैं जी। और ये एक इम्पैक्ट है। इसका मतलब यह है कि जो आप स्टॉक मार्केट में तभी निवेश करते हैं जब आप फ्यूचर, भविष्य की तरफ आपका एक सकारात्मक आप उत्साह से भरे हुए हैं, तभी आप रिस्क ले रहे हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को दिखाता है। और ये भी दिखा रहा है कि लोग शेयर मार्केट में जो वेल्थ क्रिएट होता है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि ये एक फिक्स डिपॉजिट के वनस्पत कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न होता है, रिस्क आप जोखिम ज्यादा लेते हैं, रिटर्न्स भी औसतन ज्यादा मिलने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। और म्यूचुअल फंड से अगर करते हैं तो और बेहतर चांस हो जाता है क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। तो ये पहले जो था कि कुछ लोगों को ही बाजार का फायदा मिलता था, भारतीयों को, वो आप देखिए दुगना हो गया है। पर अभी भी ये बहुत कम है। हम देखिए हमारे देश में कितनी आबादी है, 5 करोड़, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। पर एक मार्केट के एक वन वे अपवर्ड मूवमेंट की वजह से कितना फर्क पड़ गया ये आप देख लीजिए। Udayan, you mentioned about the development in China with the reverse repo rate being cut for the 14-day. Do you think there was arbitrage? The FIIs were the net sellers in the market. Do you think they profit booked for arbitrage purposes, so that they were buying into the Chinese market? When we read the Asian markets, we find that they went up by 4%, the Hong Kong's Hang Seng index. Do you think there was selling in our market to buy into their market? That's possible, Arjun, because they weren't doing all that well. Now the jury is still out whether this is enough. There are plenty of experts. If we go through the reactions of experts, there are lots of people, international experts, who say that there needs to be a fiscal stimulus as well. So there it's not just a slowdown. There's it's not slowing down of economic growth. There's a deflationary funk, as the word is going around, where you're talking about a contraction. So those dangers are there in the Chinese economy. For some experts, not for everybody,
they think that some of those things are there. And Arjun, a key part will be in the days to come, because we will be competing with other emerging markets. So there's no doubt about it. We're doing very well, but China is a potent competitor for foreign institutional money, and also they're roughly 6 times the size of our economy. So they're there as our competitors as far as foreign institutional flows are concerned. But coming back, what would there are lots of things that have been announced out there by the Chinese central bank. Now the key part is, Arjun, that what is it going to do for the property market out there? Because most of the wealth out there, investors out there, they actually have put in money in the property sector. So if that pulls, steel and everything moves ahead. But speaking about steel, I mean, our metal sector went up by 2.5%. We know that the metal stocks are volatile by nature, even though if you look at VIX, it went down by 3%. What were the reasons for the metal space to see an appreciation today? It was a China headline that came in, and there's an optimism that there's going to be offtake. China also sends steel to us. Okay, so it's a both-way movement. So the markets are going to digest what is the net result of all that is happening. And people will try to figure out, but jury is still out. It's not as if they're going to run away, because most of the people think that there's a lot more still to be done. This is a lot of people. A common verdict is that it's probably quite a bit, but it's late. But it's better than never. So you're saying that metal would be dumped into our markets in the real economy, and that has an impact on the share prices? Not that danger is always there, but the question is, in terms of, let's just isolate it in terms of, there's a fund manager, international fund manager, and he has to put it in different markets, say Indonesia, India, Mexico, or what have you. And of course China is there. Now where would that person put in if a market has been beaten down, and the projected economic growth rate, by the way, for China for this year is 5%. That is see the size of the economy, and 5% is very substantial. So people have doubts whether that will be achieved or not. But when that does change the situation a little bit, because we are competing for international flows as well. Of course, we have a very robust domestic flow as well. उद्यन अगर निफ्टी की हम बात करें तो आज जो भी हमने इसमें देखा ऑल टाइम हाई या 26,000 से ऊपर गया, और इस साल 9 महीने में लगभग 19% रिटर्न इसने दिया है, जो आंकड़ा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. तो इसको रिलेट अगर हम करें बैंकिंग सेक्टर से, तो निवेश करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, और दूसरा डिफेंस सेक्टर से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, डिफेंस को कई लोग उसको टैक्टिकल सेक्टर मानते हैं. तो मान लीजिए आपके कुछ स्टॉक्स हैं, मान लीजिए मिड कैप, स्मॉल कैप, मैंने आप उस थीम की तरफ आपने देखा था और आपको लगा काफी रनअप हो गया, काफी जबरदस्त रनअप हो गया, तो वो इन एनी केस उसमें वो आपका कोर नहीं होना चाहिए. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके ऐसे सेक्टर्स में नहीं होने चाहिए जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो वहां से आपने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, थोड़ा सा, और फिर आपने डिफेंस, वो टैक्टिकल प्ले कहते हैं, आपको थोड़ा सा सरप्लस रखना होता है कि अगर छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ये 2 से 3-4%, अगर 100 रुपए आप निवेश कर रहे हैं तो 2 या 3 रुपए उतने परसेंटेज. तो ये टैक्टिकल प्ले आप कह सकते हैं. जो थीमेटिक होते हैं, थीम्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो 2 से 3 या 4% से ज्यादा आपको उसमें पैसा लगाना नहीं होता. और बैंकिंग सेक्टर तो एक पिवट है निखिल जी, वो क्योंकि वो आप किसी भी इंडेक्स में देख लीजिए 41% के आसपास वेटेज होता है. तो भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आपको निवेश करना जरूरी है. Tell us about the power sector. What is the news? Are we talking about the government's promise in its budget to invest in the power sector? Is that what's driving the stock prices in the power space? Well, Arjun, one of the key parts, of course, one play is that you will have to have these in place. If you want to do semiconductors and stuff like that, we know how
power intensive they are. So unless you put in the power infrastructure in place, you can forget about putting a semiconductor complex out there. I mean, these are power guzzlers. AI is a power guzzler area, you know. So you need very high computing. You need lots of power. So when you define your ambition, you'll have to have the supporting infrastructure. Now, power that way is important. It's important for traditional economy. Not as just well. supply of power so that industry benefits from it, including semiconductor. What about the recovery model? How is the cash flow in this industry like? Because they've been debt-ridden. What is the sentiment like with this type of investment from the government? There have been regulatory changes. There is obviously the demand by these companies that they should be allowed to charge and collect the fees as well for supplying power. Do you think there have been changes, positive changes there that is bringing about that kind of sentiment in the stock market? Well, there is also a green play. I mean, alternative a source, all the alternative power sources. So India is committed to that. That plays there. Yes, those reforms are happening, but there's a long road to be traversed. In any case, you will, regardless of how well you do in the distribution space, generation you will have to keep increasing. So right now it's all capex based. It will have to be, and it will keep moving. And the question is, you also have international commitments, environment-related commitments, where you want solar and other net zero. And so those things you will have to do it. So it obviously is going to be a very composite kind of approach for the power sector, and that is going to get reflected in your the share prices of the companies and how it moves. So it becomes a very critical sort of baseline for an investor. उद्यन अभी जो उछाल का दौर चल रहा है, इसमें किस तरह की रणनीति अच्छी रह सकती है अगर बाजार अचानक से कभी गिरा? अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव को हम लेकर के चलें तो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, दोनों में से किस में ज्यादा गिरावट की संभावना हो सकती है? दूसरा सवाल ये कि अगर लार्ज कैप में भी इसका असर पड़ता तो बाउंस बैक में किस तरह का हम देख सकते हैं, तेजी से या स्लो डाउन? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कि हर किसी भी टेक्स्ट बुक में होगा, कहीं पे भी आप इंटरनेट में जाएं, वो ये कहा जाएगा, जो समझदारी वाली बातें करते हैं, ठीक है, जो डेटा बैक्ड है, तो वहां पे ये करना है कि आपको कुछ अलग नहीं करना जी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप अलग, जब आप सड़क में अगर ट्रैफिक होती है तो, और आप सड़क को क्रॉस करने का आपका एक तरीका एक होता है, तो अगर जैम हो या ना हो, आप वही आपका तरीका होगा, आप बाएं देखेंगे, दाएं देखेंगे, फिर एक तरफ देखेंगे, फिर दोनों तरफ देखेंगे, और फिर आप क्रॉस करेंगे। आप अगर नाव में जाते हैं, वो ही एक तरीका रहता है। तो जो आपका अप्रोच है वो चेंज नहीं होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो क्योंकि आपका निवेश जब आप कर रहे हैं, आपका एक टारगेट होना जरूरी है और आपको बने रहना जरूरी है। ये स्टडीज ने अभी इंडिया में भी प्रूफ हो चुका है कि जब आप बहुत लंबी अवधि तक बने रहते हैं और आप टाइम करने, आप कह रहे थे किसमें गिरेगा नहीं गिरेगा, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। आपने सोचिए और निवेश कीजिए और लंबे अवधि तक बने रहिए, क्योंकि तकरीबन 10 या 20% टाइम जब मार्केट रिबाउंड करते हैं, तभी मैक्सिमम जो आपका जो गेन होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा आपको रिबाउंड से मिलता है। और क्योंकि आप और हम जैसे लोगों को मालूम नहीं हो सकता कि कब रिबाउंड करेगा और कब गिरेगा, इसलिए आप नहीं बने रहेंगे तो वो जो मौके हैं आप खो लेंगे। Let's now move on to our second headline story. The S&P Global Ratings today retained India's growth forecast at 6.8% for the fiscal year 2024-25. In its quarterly economic outlook for the Asia-Pacific region, the Global Ratings Agency said India's GDP growth moderated in the June quarter as the high interest rates temper urban demand. The rating agency also retained India's growth forecast for the financial year 2025-26 at 6.9%. Meanwhile, S&P further reduced China's GDP growth to 4.3% in the calendar year 2025. S&P reduced China's GDP growth forecast for 2024 to 4.6% from 4.8%. We were talking about China a while ago, and you did mention that it has been re-rated to 5% or below 5%. But as far as India is concerned,
even though it's 6.8% and 6.9% for the next 2 years as far as the GDP growth is concerned, how do you see the interest rates coming down? When will the RBI take the decision? Because right now it is the repo rate is 6.5%. When is the RBI going to take a decision to cut the repo rate? Arjun, it will pretty much depend on the food prices. What does the RBI think about the food prices? There's always this concern whether the food prices are going to take things up. If they, in the US, it is the fuel prices and the housing prices. So here, the moment RBI starts feeling that the food prices are softening up, then they would, you can start expecting decisions on the rate cycle turning. I mean, a cut happening. But till RBI is confident about it, you can expect RBI to hold its ground. Let's now move on to a third headline story. The labour force participation rate, the LFPR, in the usual status for persons of age 15 years and above has increased to 60.1% during July 2023 to June 2024 from 57.9% during July 2022 to June 2023, according to the Periodic Labour Force Survey annual report released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The report stated that the LFPR for females of the age 15 years above in the usual status has increased from 37% during July 2022 to June 2023 to 41.7% during July 2023 to June 2024. The data reflected that the LFPR for male of the same age group in the usual status increased from 78.5% to 78.8% during the same time span. Worker population ratio, WPR, that is a percentage of employed persons in the population, stood at 58.2% during July 2023, June 2024 against 56% in the year ago. The same for male and female was 76.3% and 40.3% respectively. Meanwhile, the unemployment rate for persons aged 15 years and above has remained unchanged at 3.2% in July 2023 to June 2024, according to the report. The report stated that while the unemployment rate for males has shown a marginal decline from 3.3% in the previous year to 3.2% during July 2023 to June 2024, among females it has witnessed an increase from 2.9% to 3.2% during the same time span. और आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के एक अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्तिगत ट्रेडिंग करने वाले लोगों को इक्विटी के वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेक्टर में गंभीर नुकसान हो रहा है, जबकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने वाले और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मुनाफा वसूली करने में सफल रहे हैं। सेबी ने इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों में व्यक्तिगत ट्रेडिंग करने वाले लोगों की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में उनके लाभ और हानि पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए यह अध्ययन किया था। सेबी के अनुसार इस अवधि में व्यक्तिगत ट्रेडिंग करने वाले लोगों का कुल घाटा 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि केवल 7.2% व्यक्तिगत ट्रेडिंग करने वाले 3 वर्षों की अवधि में लाभ दर्ज करने में कामयाब रहे। इनमें से केवल 1% लेन देन लागत के समायोजन के बाद 1 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा कमा सके हैं। इस बीच करीब 93% व्यक्तिगत निवेशकों को औसतन करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करने वाले 33,000 करोड़ रुपए और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 28,000 करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक लाभ कमाया है। अध्ययन के अनुसार यह भी पता चला है कि अधिकांश मुनाफा बड़ी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न किया गया, जो कि ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। उद्यन जी, अभी जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे लेकर के निवेश को लेकर के, तो सेबी ने ये जो बात बताई कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में व्यक्तिगत ट्रेडिंग करने वालों को नुकसान हो रहा है, यानी कि लोगों को सहजता से काम लेना होगा, लोगों को देख करके काम करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। देखिए, जो मैंने आपको बात कही थी, जब आप निवेश करते हैं, निवेशक और ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म पोजीशन लेके आप मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक निवेशक का काम नहीं है। निवेशक को कुछ जरूरतें हैं जिसकी वजह से निवेशक निवेश कर रहे हैं। तो ये यहां से तो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होता है, संस्थान जब निवेश करते हैं, उनके डीप पॉकेट्स होते हैं, उनकी रिसर्च डीप होती है, उनके एल्गोरिथम्स होते हैं जो आप कह रहे हैं। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने तो मुनाफा कमाया, पर नुकसान किसी को जो उठाना था, बेचारे आप और हम जैसे निवेशक जो थे एक्साइटेड होकर जो एफएनओ में गए, वो उनको नुकसान उठाना पड़ा।
और आगे बढ़ते हैं। एशिया के प्रमुख 5 शेयर बाजारों में से आज 4 में बढ़त देखने को मिली। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 4% ऊपर चढ़ गए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% से अधिक और जापान का निक्केई 0.5% से अधिक के लाभ में रहा। इस बीच सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में करीब 0.5% की गिरावट देखी गई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक सकारात्मक कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक फ्रांस का कैक लगभग 1.5% ऊपर था। जर्मनी का डेक्स 0.5% से अधिक के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था और लंदन का फुट्सी 0.2% की तेजी पर था। Very briefly, could you tell us about this 14-day reverse repo rate and the injection of 234.6 billion yuan by the Central Bank of China into the banking system? Yeah, the idea is to make more cash available, Arjun. So when you pump in more cash, what happens is it's hoped that people are going to take loans, and that's going to spur business activity. It's going to spur demand. People are going to offer people deals, and consumers are going to do that. But the argument on the other side is the credit offtake has been very poor in China, and that is impacting the demand. So they are saying that probably this will in all likelihood be followed by some kind of a fiscal stimulus. This has been done by the central bank. So this will probably will be required to really drive home the advantage. Well, let's have a look at the US market now. US stocks ended with modest gains yesterday, with the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average touching new closing highs, supported by comments from the Fed policymakers and steady business activity data. The S&P 500 gained 0.2% and the Nasdaq Composite as well as the Dow Jones Industrial Average were marginally up by 0.1%. To what extent is the Fed's decision to cut the discount rate impacting the markets right now, notwithstanding the price to earnings ratio, the valuation of these stocks? Well, the equity markets are behaving okay, and this is what was being expected. But Arjun, the interesting part, already people are disseminating the information. So what's happened, Arjun, very interestingly, in the bond market, the yields have gone up. So a lot of people are now beginning to say that, which was the thing that was being mentioned, that does the Fed, some parts of the market is asking, does the Fed know something which they don't know? So the question is, the whole deal was that there's going to be a soft landing and then there's going to be rebound, and the idea is not to get things too softened up. But the question is, now experts had said that if 50 basis point cuts happens, then there is also going to be a fear in some quarters that what if the inflation comes back, and the bond yields are showing that. Well, let's have a look at the crude oil market now. Oil prices surged more than 2% today following news of monetary stimulus from top importer China and supply concerns amid escalating Middle East conflict. In the global crude market, Brent crude was trading 2.1% up at $75.47 per barrel, and the US West Texas Intermediate was up by 22.3% at $71.99 per barrel when reports last came in. Very briefly, your take on the oil market. It's totally dependent on the tensions out there, Arjun. If this impacts supply, then we are in for a little bit of trouble. और श्रोताओं आपको बता दें, सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.3% बढ़कर 74,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी की बात करें तो 0.7% ऊपर चढ़कर 89,910 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.3% बढ़कर 74,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था और दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.7% बढ़कर 89,913 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। उद्यन जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end flat after hitting new highs. Sensex surges to an all-time peak of 85,163. Nifty crosses the 26,000 mark for the first time. S&P Global Ratings retains India's growth forecast at 6.8% for the current fiscal year, and the labour force participation rate increases to 60.1% during July 2023 to June 2024. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Mantra. Market Mantra.
Matra.